please. No noise. Okay, students. Deviation of light ray in refraction. अब देखिए एक लाइट रे को कंसीडर करिए. The angle of incidence for this light ray is I. It get reflected. If there were no reflection, then light ray should have traveled straight. So this is called delta. Delta is called angle of deviation. So see the diagram. These two angles. This angle should be equal to. अब देखिए ये आपका जो टोटल एंगल है R है, and this angle is equal to R minus delta. R minus delta. ओके, थोड़ा इसको और अच्छे से करते हैं. तो देखिए सबसे पहले तो हम डेविएशन को समझते हैं. ये डिविएट हो गई. तो डेल्टा इज कॉल्ड एंगल ऑफ deviation. So deviation is given by I minus R. I minus R, because this angle is R. This angle is R, and this angle is also R. But यहाँ पर देखिए क्या है कि R is greater. R is greater. So deviation is R minus I when R is greater than I. Deviation is I minus R when I is greater than R. तो deviation को आप जरा समझिए कि deviation जैसे ये हमने एग्जांपल ले लिया, light rays traveling from air to glass. Air to say, do not say like this, from any one medium to another medium. It is better to say that medium 1 to medium 2. Now, if light ray bends towards the normal, their R will be smaller angle. Then this will be the delta. So in this case, delta is I minus R. I minus R. अब हम इसको थोड़ा और अच्छे से करते हैं. ये रेयरर ले लेते हैं, इसे ले लेते हैं डेंसर.
और इस केस को हम ले लेते हैं डेंसर टू रेयरर। तो ये फॉर्मूला कब लागू होगा? R माइनस आई डेंसर टू रेयरर और I माइनस आर व्हेन rarer light ray travel from rarer medium to the denser medium. So please note it down this. अब देखिए, अब हम वर्कआउट करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पे। I will start with the topic refraction through prism. You can give the heading. D2R। अब आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसे। एंड R2D। R stands for rarer medium and D stands for denser medium. D stands for denser medium. So let us start today's topic. The today's topic is refraction through prism. Give the heading refraction through prism. Let me tell you about this topic. In the history of NEET examination, हमें कहीं से क्वेश्चन मिले चाहे ना मिले, पिछले 10 साल के पेपर्स को आप just go through the last 10 years paper, but you will find a very interesting fact. Every year we are getting one question on prism. चाहे लेंस पे क्वेश्चन आए चाहे नहीं आए, इंस्ट्रूमेंट्स पे आए चाहे नहीं आए, पर यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे ज्योमेट्री ऑफ प्रिज्म। ज्योमेट्री ऑफ प्रिज्म। Now consider a light ray. It incident on first face of prism. Here we will draw normal, because here the light ray is changing its medium. So it is called N1, normal one. So this is called angle of incidence. When light ray enters the prism, it gets refracted. But definitely light rays coming from air, so it will bend towards the normal. Now here the second refraction will take place. Here the second refraction will take place at this point. This angle is R1, this angle is R2. Now light ray is traveling from denser to rarer, so it will bend away from the normal. This is E. अगर मान लीजिए अगर प्रिज्म नहीं होता, तो क्या होता? Light ray should have traveled straight, but due to prism, light ray suffers two deviation. Sorry, one at first phase. This is first phase of prism, and another one is at second phase.
This will give the delta. अब चलिए इसको लिखते हैं I angle of incidence R1 and R2 angle of refractions E angle of emergence delta angle of deviation, and this very important angle A. A is called refracting angle of prism. Refracting angle of prism. Generally, the prism is made up of glass. Light rays traveling first from air to glass, then glass to air. A, B, C. AB is first phase of prism, and AC is second phase of prism. तो सबसे पहले हमें एंगल्स के बारे में इंट्रोडक्शन लेना चाहिए. So you draw it. Geometry of prism means relationship between angles of prism, a formula which connects the angles of prism together. So are you done with this? So first you draw it, then we will do it. Geometry of prism, again I am telling you, it has a formula which connects the angle of prism, which connects the angle of prism. Today after class, you will get another question level practice and your doubts. So please draw it as fast as possible. अब देखिए हम इसे डेवलप करेंगे. ओके, तो डायग्राम आपका बिल्कुल क्लियर बनना चाहिए. ये आपकी इंसिडेंट रे है. ये है इमर्जेंट रे.
तो चलिए अगली स्लाइड पे जाके आप एंगल्स को कनेक्ट करते हैं। डायग्राम को आप अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए किसी भी एंगल में तीनों इंटरनल एंगल का समेशन 180 डिग्री होता है। तो मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। इस ट्रायंगल को आप देखिए ध्यान से। जो ट्रायंगल मैं आपको बता रहा हूँ ये देखिए क्यू आर टी, क्यू आर टी, ये दो इंटरनल एंगल्स तो हो गए R1 और R2। तो हमें तीसरा इंटरनल एंगल निकालना है। तो हम निकाल सकते हैं। दिस थर्ड इंटरनल एंगल कैन बी रिटन एज 180 minus R1 plus R2. So this is the first step. 180 minus, because the other two angles are R1 and R2, तो तीसरा एंगल कैसे निकालेंगे? 180 में से उन दोनों के समेशन को सॉरी माइनस कर देंगे। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। इन एनी क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, इन ए क्वाड्रिलेटरल sum of all internal angles is equal to 360 degree. इसलिए स्लाइड का डायग्राम बना रहे हैं। ए क्यू टी आर लेंगे, ए क्यू टी आर, ओके। ए क्यू टी आर in quadrilateral A Q T R. Sum of all angle. This angle is a angle of prism. This is 90 degree क्योंकि यहाँ पे हमने normal draw किया, and this is also 90 degree, and this you know it, अभी हमने calculate किया था 180 minus R1 plus R2. So we will add A plus 90 plus 180 minus R1 plus R2 plus 90 degree is equal to 360 degree. So 90 plus 180, 270 plus 90, 360. 360 equal to 360, it gets cancelled. So you are left with A minus, अब आपके पास बचा A minus R1 plus R2 equal to 0. इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए। ये फर्स्ट ज्योमेट्रिकल रिजल्ट आ गया, that A equal to R1 plus R2. That you should remember. A equal to R1 plus R2. R1 and R2 are angle of refraction, and A is the angle of prism, refracting angle of prism. So when light ray enters first phase and comes out of second phase, it is always true that we can always write A equal to R1 plus R2. But you should remember, आपको याद रहना चाहिए कब कब लगेगा ये फॉर्मूला, जब लाइट रे फर्स्ट फेज में एंटर होगी और सेकंड फेज से बाहर निकलेगी तभी। Then only we can always use this formula A equal to R1 plus R2. ये थोड़ा कैसे आया फॉर्मूला ये मालूम होना जरूरी है। ये फर्स्ट ज्योमेट्रिकल रिजल्ट हो गया।
सॉरी, सॉरी। सो आर यू डन विद दिस? नोट कर लिया आपने इसे? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, when light ray passes through a prism, it suffers two deviations. One at first face of prism and other at second face of prism. And here we draw the normal N1, and this is N2, air, glass, glass to air. फर्स्ट फेस पे लाइट रे रेयरर टू डेंसर जा रही है. दिस एंगल इज आई, दिस एंगल इज R1, this is E, this is R2. So delta, if delta shows the total deviation, अगर delta total deviation बताएगा तो delta can be written as delta 1 plus delta 2. Delta 1 deviation at first phase, delta 2 deviation at second phase. सेकंड फेज पे भी तो लाइट रे मुड़ेगी. अब डेल्टा को हम लिख सकते हैं, डेल्टा 1 को हम लिख सकते हैं I माइनस आर. रेयरर मीडियम का एंगल बड़ा होगा और डेंसर का छोटा होगा. एंड डेल्टा 2 वी कैन राइट E माइनस R2. इसको नोट कर लीजिए. सॉरी. सो आर यू डन विद दिस? आपने नोट कर दिया? ओके. डिविएशन निकालने के लिए जिस फेस पर रिफ्लेक्शन होता है वहां एक एंगल से, या तो एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को माइनस करते हैं, और हमेशा किस एंगल से दूसरे एंगल को माइनस करते हैं ध्यान रखना. रेयरर मीडियम का एंगल बड़ा होता है और डेंसर का छोटा होता है. और यहाँ ये बिल्कुल क्लियर है कि एयर का एंगल, एयर रेयरर मीडियम है और ग्लास डेंसर मीडियम है, तो एयर के एंगल बड़े होंगे.
तो अब हम अगली स्टेप में जा रहे हैं और नेट डिविएशन को फाइंड आउट करते हैं। चलिए, सो नेट डिविएशन इज डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। इसको याद रखिए, I प्लस E और माइनस कॉमन ले लीजिए, बट वी नो दैट A is equal to R1 plus R2, so it can be written as minus A plus delta equal to I plus E। तो प्रिज्म की ज्योमेट्री के दो रिजल्ट्स हैं, ये पहला रिजल्ट है, दूसरा रिजल्ट है। और पहला रिजल्ट हम कर चुके हैं, A इक्वल टू R1 प्लस R2। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, ये फॉर्मूले हमेशा एप्लीकेबल है, लेकिन कब एप्लीकेबल है? व्हेन लाइट रे enters the first phase and comes out of the second phase। मान लीजिए लाइट रे फर्स्ट फेज में एंटर हो गई, but it does not come out of the second phase, then this formula will not be applicable। One more thing, here light ray is traveling from air to glass, air to glass, and here it is traveling from glass to air, I R1 R2 E। और अगर हम लाइट रे का पाथ रिवर्स कर दें तो उसके पाथ में कोई चेंज नहीं होगा। तो म्यू कैन बी रिटन एज साइन आई बाय साइन R1, एज वेल एज म्यू कैन बी ऑल्सो रिटन एज साइन ई बाय साइन R2। और जब हम बात कर रहे हैं म्यू की, तो उसका मतलब है ए म्यू जी। सो नोट इट डाउन। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट केसेस करेंगे जिससे हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। So this is all about the geometry of prism। A plus delta equal to I plus E, A equal to R1 plus R2, mu equal to sin I by sin R1, or you can write mu can be written as sin E upon sin R2, and mu stands for A mu G। Okay, so we are moving to the next slide। अब हमारे पास प्रिज्म की ज्योमेट्री है। अब देखिए, अब हम कुछ केसेस बनाएंगे जो हमें हमारे न्यूमेरिकल्स और ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। फर्स्ट, व्हेन लाइट रे incident normally on first phase of prism। अब देखिए, when light ray enters normally it does not bend, you know it will go straight। The refraction will take place at this phase E, and this sorry,
दिस इज ई, और ये होगा हमारा R2। अब देखिए जनरली होता क्या है, अगर हम प्रिज्म की ज्योमेट्री समझते हैं, लाइट रे इंसिडेंट, नॉर्मल से बनाया गया एंगल कितना है, I, this is R1, but here the light ray incident along the normal, ऐसे केसेस में I और E R1 क्या हो जाएंगे, जीरो, क्योंकि लाइट रे नॉर्मल पे ही आ रही है। I और R1 देखिए नॉर्मल से बने हुए एंगल होते हैं, देखिए जरा समझिए आप इस बात को। नॉर्मल से लाइट रे जितना एंगल्स बनाती है उसे हम कहते हैं I और R1। पर अगर लाइट रे नॉर्मल पे आएगी तो क्या होगा, वो नॉर्मल से कितना, इफ इट ट्रेवल्स अलोंग द नॉर्मल, अगर वो अलोंग द नॉर्मल ट्रेवल करेगी तो नॉर्मल से बनाए गए एंगल्स क्या होंगे, डेफिनेटली जीरो होंगे। ऐसे केसेस में अगर आपको न्यूमेरिकल्स आए तो आपको आई और आर वन को जीरो रखना है। और आप जानते हैं ए इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, आर वन तो जीरो हो गया तो ए इक्वल टू आर टू, ये एंगल हमेशा ए के इक्वल होगा। और फिर बाकी फॉर्मूले तो बिल्कुल क्लियर है, ए प्लस डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई चेंज हो जाएगा ए प्लस डेल्टा इक्वल टू ई में, और वो फॉर्मूला तो म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर वन। अब देखिए जरा मैं बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, ये एप्लीकेबल नहीं है यहाँ। क्यों? क्योंकि साइन जीरो अपॉन साइन जीरो, जीरो अपॉन जीरो मैथमेटिक्स में डिफाइन नहीं होता है, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं। तो एप्लीकेबल फॉर्मूला कौन सा है, एप्लीकेबल फॉर्मूला है, हम यहाँ लगा सकते हैं म्यू इक्वल टू साइन ई अपॉन साइन ऑफ R2, दिस इज एप्लीकेबल। जैसे मैंने आपको लिखा है वैसे ही आप इसको लिखिए। तो अब आप देखिए ऐसे केसेस में सॉल्व कैसे करेंगे। जब लाइट रे नॉर्मल पे आएगी तो भाई नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगी, जीरो। फर्स्ट फेज पे लाइट नॉर्मल पे आ रही है तो नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगी, जीरो। ओके तो चलिए अब आपने इसे नोट कर लिया, तो अब हम इस पर एक क्वेश्चन करेंगे। लाइट रे इंसिडेंट normally on first phase of prism. Calculate the angle of deviation of this light ray given mu equal to 3 by 2 and a very famous question,
which used to came in the examination for some number of times. अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। अब हमें केस मालूम है और एंगल ऑफ प्रिज्म भी गिवन है ना, कितना गिवन है 30 डिग्री। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। वी नो दैट ए इक्वल टू व्हाट, R2, so R2 will be equal to A, that is 30 डिग्री। R2 आ गया। इसका हम यूज करेंगे म्यू इक्वल टू साइन E अपॉन साइन ऑफ R2। हमें केसेस को याद रखना पड़ेगा। 3/2, E मालूम नहीं है हमें, R2 मालूम चल गया, साइन 30 डिग्री। तो आप इसको सॉल्व करेंगे। 3/2 इंटू साइन 30 इक्वल टू साइन E, और साइन 30 की वैल्यू होती है, तो अब इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं। 3/2 इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री होता है 1/2। ये कितना आ गया 3/4। सो साइन ए इज कमिंग एज 3/4, और हम जानते हैं किसकी वैल्यू है, साइन 48.5 डिग्री की वैल्यू है। देयरफॉर E इक्वल टू 48.5 डिग्री। अब आप देखिए, अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे A प्लस डेल्टा इक्वल टू E। वी हैव ऑलरेडी डेवलप्ड द फॉर्मूला। A 30 है, E अभी हम निकाल चुके हैं 48.5, सो डेल्टा विल बी 48.5 माइनस 30। ये कंपटीशन क्वेश्चंस है, आपको ये क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। एवरी ईयर वी गेट one question, 100% sure, one question in the NEET examination from prism। prism is tough, there's no doubt, ऐसा स्टूडेंट कहते हैं। एक्चुअली टफ इसलिए लगता है कि आपके पास क्वेश्चन को सॉल्व करने की थ्योरी नहीं है। तो आपको थ्योरी बना दी, देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया। सो यू हैव नोटेड। आपको सब ये याद रखना पड़ेगा। A इक्वल टू R2 होता है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, 1/2 होती है। तो अगर आपको केस मालूम है तो आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आराम से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। Okay, next question. So I'm moving to the next one. Second case. When light ray emerges, when light ray emerges at right angle, at right angle, ऐसे। तो आप अच्छे जानते हैं when light ray changes the medium at right angle,
then it does not bend at all. तो ये रही इंसिडेंट रे। ये एंगल हो गया आई, ये एंगल हो गया R1। अब थोड़ा आप याद रखिए, जिस फेस पर लाइट रे 90 डिग्री से पास होती है तो उस फेस से बनने वाले एंगल क्या हो जाते हैं, 0 डिग्री हो जाते हैं। यहाँ हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन R1, ए इक्वल टू R1 प्लस R2, बट ए इक्वल टू R1 एंड ए प्लस डेल्टा इक्वल टू, एक मिनट, तो पूरा लिख के करते हैं, पर R2 तो 0 है। Since R2 is 0, so we can write A equal to R1. अब A plus डेल्टा इक्वल टू क्या है, I plus E। तो A plus डेल्टा E 0 हो गया, तो A plus डेल्टा इक्वल टू I। तो ये रहे आपके फॉर्मूले। With the help of these formula cases, you can always solve the question easily. So note it down. ओके, नोट कर लिया आपने। अब देखिए, अगला केस करते हैं, तीसरा। When emergent ray touches the prism, so it is like this. ये रही emergent ray touches the prism, तो डेफिनेटली E क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, और R2 किसके इक्वल हो गया, C के इक्वल। एंड यू नो इट वेरी वेल, C is called critical angle. Okay,
सो ये आपने लिख लिया। दूसरी बात मैं आपको बार बार बोलना चाहता हूँ, ये क्लास सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एग्जाम में कुछ करना चाहते हैं, सिर्फ उनके लिए ये क्लास है। और इस क्लास में वही पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम में आता है। वो इजी भी हो सकता है, वो टफ भी हो सकता है, पर आपको उसे करना पड़ेगा। ओके, फोर्थ केस। When light ray is reflected by the second phase of prism, second phase of prism, prism का second phase light ray को reflect करता है। Okay, so we should draw like this. Total internal reflection. Definitely, जब डेंसर मीडियम में बनने वाला एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, whenever the angle which is formed in denser medium is greater than critical angle. अब देखिए, एडिंग R1 to both sides, ध्यान दीजिए कहीं नहीं मिलेगी आपको ये थ्योरी। इस इक्वेशन में हमने दोनों साइड में R1 को ऐड कर दिया, कर सकते हैं, बट वी नो दैट R1 plus R2 can be written as A, so A is greater than C plus R1. So you should note it down. Fifth case. Second phase of the prism is silvered. Silvered का मतलब वो मिरर की तरह काम करता है। A light ray enters through first phase and अच्छे से नोट करिएगा, you will not find such theory in books. And after, ये वो थ्योरी है जो आपके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेगी। And after reflection from second phase, the light ray retraces its path. मतलब जिस पाथ पे आई थी उसी पे वापस चली जाएगी। तो अब देखिए ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो हमारा प्रिज्म का सेकंड फेस है वो एक मिरर की तरह वर्क कर रहा है। इट इज वर्किंग लाइक अ मिरर। और एक मिरर से लाइट रे स्ट्राइक करने के बाद अपने पाथ को रिट्रेस तभी करती है
अपने पाथ को रिट्रेस तभी करती है जब वो उस मिरर पर 90 डिग्री पे आई हो। ये देखिए, तो डायग्राम ऐसे बनेगा। ये हो गया हमारा नॉर्मल, और ये हो गई हमारी लाइट रे। अपने पाथ को रिट्रेस करती है। अब देखिए, आप अच्छे से जानते हैं कि ये जो एंगल है ये R1 है, ये R1 है, और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि ये नॉर्मल का एंगल है। अब ये देखिए, 90 में से हमने R1 को माइनस कर लिया तो हमें ये एंगल मिलेगा 90 माइनस R1। और अब देखिए, ये 90 है और ये क्या है, A है। और एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का समेशन हमेशा 180 होता है। सो A माइनस R1 इज 0, A इक्वल टू R1। और आपके पास फॉर्मूला है म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन R1। तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन ए। अब जरा मैं आपको जो बोलना चाह रहा हूँ आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। ये देखिए, इस इक्वेशन को देखिए, इसमें म्यू है, आई है और ए है। अगर क्वेश्चन कैसे बनता है एग्जामिनेशन में, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको आई और ए की वैल्यू गिवन है तो आप म्यू निकाल सकते हैं। म्यू, आई और ए, इसमें से ये तीन चीजें हो गई। म्यू की वैल्यू, आई की वैल्यू और ए की वैल्यू। इन तीन चीजों में से अगर आपको कोई सी भी दो वैल्यूज दी जाए तो आप तीसरी को निकाल सकते हैं। कितनी बार एग्जामिनेशन में आया है ये? So many number of times it occurred in the examination. तो इस पर एक क्वेश्चन करेंगे, आप ही के एग्जामिनेशन से लिया गया, 2019 2019। तो देखिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। वी विल सॉल्व वन क्वेश्चन। Examination question: a prism ABC of angle 30 degree has its face AC silvered. A ray of light incident at an angle of 45 degree at the face AB. At the face AB retraces its path after
reflection at face AC. The refractive index of material of prism is 1.5. Second answer root 3 by 2. Third answer root 2. Fourth answer 4 by 3. And you are given this triangle. Examination question A, B, C. अब देखिए प्रिज्म का एंगल भी दिया हुआ है। बिना एंगल के आपने कैसे आंसर निकाल दिया? अच्छा 30 डिग्री दिया हुआ है तो I is 45 डिग्री is 30 डिग्री। हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन ए साइन आई साइन 30 सॉरी साइन आई इज 45 डिग्री and A is 30 degree. So mu will be 1 by root 2 upon 1 by 2. So it will come as 2 upon root 2. अब 2 को आप लिख सकते हैं root 2 into root 2. So the answer is mu equal to root 2. ये फायदा होता है अगर आपके पास अच्छी थ्योरी है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की तो आप बहुत तेजी से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये नोट कर लीजिए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर यू डन विद दिस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिखिए हमेशा आप फिर याद रखिए okay next we will write limiting angle of incidence you will not find in book again I am telling you I limit it is the minimum angle of incidence it is the minimum angle of incidence for which light ray enters the prism and able to come out of from
सेकंड फेज, सेकंड फेज। अब इसमें तीन बातें हो सकती है। इफ आई इज लेस देन आई लिमिट, light ray will not come out of second phase. If I equal to I limit, तो ऐसा केस बन जाएगा। लाइट रे सेकंड फेज से बाहर तो आएगी, टच करते आएगी, ग्रेजिंग इमरजेंस का केस। तीसरा, इफ आई इज ग्रेटर देन आई लिमिट, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लाइट रे प्रिज्म में आएगी, जाएगी और सेकंड फेज से बाहर भी आ जाएगी। तो तीन कंडीशन हो जाती है, इसको आप नोट कर लीजिए। कंपटीशन के लिए फिजिक्स पढ़ना बिल्कुल डिफरेंट है। अब आपको समझ में आ गया होगा आज की क्लास से, व्हाई स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू मेक ए सिलेक्शन थ्रू द कंपटीशन। ये थ्योरी पढ़नी पड़ेगी आपको, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बातें करने से कोई भी सिलेक्शन नहीं हो सकता। इफ यू आर ड्रीमिंग अ सिलेक्शन, वेरी नाइस, अच्छी बात है, बट ड्रीम देखने से तो पूरे नहीं होते। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर मिलते हैं, इसको अभी यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है आपने इसे नोट कर लिया होगा।